नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम हम और हमारी आध्यात्मिक दुनिया में। ये है हमारा एपिसोड नंबर 3। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल एक ट्रेंडिंग आचार्य जी का लेक्चर मैंने सुना, जिसमें वो कह रहे थे कि शिव जी तो कोई है ही नहीं। तो मुझे बहुत अजीब लगा सुनकर, क्योंकि अगर शिव जी नहीं है तो महाशिवरात्रि क्यों मनाई, और 144 साल के बाद जो महाकुंभ आया तो गंगा जी आखिर किसकी जटाओं से बह करके स्वर्ग से नीचे उतर चली धरती पर। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग गए। अब देखिए, मैं कोई बहुत पहुंची हुई साधु संत या महात्मा तो हूँ नहीं, जो कि हमारे मतलब शिव जी को किसी ने नकार दिया और मुझे अच्छा लगे। तो मैं सोचती हूँ कि हम ज़रा ढूंढें अमरदीप जी को कि वो कहाँ है। एक्चुअली ये एपिसोड बनने में भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि अमरदीप जी गायब थे। वैसे तहकीकात के बाद पता चला कि अमरदीप जी भी शिव जी को ढूंढ रहे थे। तो चलिए हम सबसे पहला प्रश्न मार्गदर्शन में उन्हीं से पूछें कि हु इज़ शिव जी। शिव जी कौन है? अमरदीप, ओवर टू यू। Who is Shiva? Well, Shiva is one of the most revered gods in Hinduism, and he embodies, destruction and transformation. Okay, he plays a central role in the trinity of gods, which is Brahma, the creator, Vishnu, the preserver, and Shiva, the destroyer. In Hindu cosmology or philosophy, destruction is not a chaotic act. It's not an act of chaos or loss. It's a essential part of cycle of life, which leads to new beginnings, new starts, transformation, okay, and renewals. So, and Shiva literally means nothing. It stands for that which is not, or nothingness. Okay, today's modern science, by the way, proves that everything has come from nothing. The whole cosmos or universe came from nothing, or the Big Bang, and everything goes back to nothing. So the stars and galaxies have their own deaths, okay, slow and steady deaths, I would say. Uh, so, so these galaxies are just a very small part or sprinkling in the whole cosmos or universe. The vast part of universe is nothing, is empty space, okay, which can be revered as Shiva. So everything comes from nothingness or Shiva, and everything goes back to Shiva. Okay, I would say. Shiva is also referred as Adiyogi or Adi Guru for us. Adi stands for first. He was the first guru or first yogi who taught the world the yogic sciences. Okay, his first set of disciples were Sapt Rishis, 7 of them. They are called Sapt Rishis. Okay, and he did it in the in Himalayas, here near Kedarnath. Okay, and when we talk about yoga, a lot of us think yoga is standing on the heads or doing some breathing exercise. No, yoga is a very ancient I would say philosophy, ancient part of the Hindu philosophy or practice, which is very holistic in nature. It connects mind, body, and spirit, through body postures, breathing, and meditation. Okay, to ensure the holistic health, mental, physical, and spiritual health. Okay, that is yoga for us, and that was taught by Shiva for the first time. Okay, and then last but not the least, Shiva also stands for pure consciousness, or ultimate reality. This has been depicted very beautifully in Nirvana Shatkam or Atma Shatkam slokas, which we'll play for you. That these slokas were created by Adi Shankaracharya, and these slokas show that how Shiva transcends duality. Okay, and he is nothing but pure consciousness. Okay, we'll play the video for you. Okay, thank you. न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता
सच्चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चलिए, ये तो हम समझ गए कि शिव जी का अर्थ है प्योर कॉन्शियसनेस, एंड शिव जी वॉज द पर्सन और सुपर पर्सन हु स्टार्टेड योगा। और देखिए ना, योगा डे पूरे संसार में अब आजकल मनाया जाता है। तो शिव जी का वजूद है, और शिव जी कौन है ये अभी हमने समझा। पर शिव जी हैं कहाँ? क्या वो चांद तारों में है, या वो कैलाश में है, या वो केदारनाथ में है, या वो अपने फैमिली के साथ कहीं पर हैं? मतलब वेयर इज शिव जी? या वो यहाँ प्रयागराज में बैठे हुए हैं और उनकी जटाओं से गंगा मैया बह रही हैं? एंड अमरदीप, आप इतने दिन तक गायब रहे, तो मुझे बाद में पता चला कि आप भी शिव जी को ढूंढ रहे थे। सो वेयर इज शिव जी, एंड वेयर हैव यू बीन सीकिंग शिव जी? ओके, ज़रा बताइए। Well, that's a good question. Where is Shiva and where have I been seeking him? Okay, so as per the Hindu scriptures, Shiva lives in Mount Kailash, right? Near Mansarovar Lake in Himalayas. Okay, however, as we discussed earlier, Shiva stands for nothingness, and today's modern science proves that everything came from nothing and goes back to nothing. For me and other spiritual seekers, Shiva is the divine who exists along with us in our soul or higher self. We don't have to seek him in temples, Vedas, yagnas, or these places like Kailash. He is very much inside us as pure consciousness, okay, which is beautifully mentioned in the Nirvana Shatkam shlokas which we played earlier. We can access anytime. We can access him anytime through spiritual practices like yoga, mantras, or meditation. Okay, thank you. तो चलिए, हमें ये पता चल गया कि वाकई में माउंट कैलाश पर शिव जी विराजमान हैं, और वो हमारे दिल में भी रहते हैं। जब हम अपने हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ेंगे तो शिव जी अपने आप हमें दर्शन दे देंगे। वेल वेल वेल, वेरी नाइस। अब मेरा तीसरा प्रश्न अमरदीप आपसे ये है कि रिसेंटली वी सेलिब्रेटेड महाशिवरात्रि। सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ महाशिवरात्रि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिव जी एंड स्पिरिचुअलिटी? महाशिवरात्रि अभी बहुत धूमधाम से 26 फरवरी को हमने मनाया, और वो एक तरह से समापन दिवस भी था सरप्राइजिंगली महाकुंभ का भी। और मैं ये जानना चाह रही थी कि महाशिवरात्रि और शिव जी और अध्यात्म का आपस में क्या संबंध है? प्लीज़ इस पे चर्चा करें। Yes, Mahashivratri happened recently, and I had the fortune to be a part of Mahashivratri celebrations at Sadhguru's ashram in Coimbatore, where Mahashivratri is celebrated in a very grand manner throughout the night, okay, by Sadhguru and his disciples. So I really thoroughly enjoyed it. Mahashivratri is obviously very important and significant in terms of Shiva and spirituality. Okay, and before that, let me explain what is Mahashivratri and why it is celebrated. Okay, so as per Hindu scriptures, Mahashivratri is the wedding anniversary of Shiva when he married Parvati. Okay, and that's why people celebrate it most Mahashivratri. Okay, for spiritual people, it's the most important event in the spiritual calendar. Okay, so Shivratri, every month there is a Shivratri. Okay, when which is the darkest day of the month. Okay, so Mahashivratri happens in February, March. Okay, when the and it happens to be the darkest day of the whole year, and our planet is positioned in such a way that the cosmic energy is at its peak on that particular day in the year. Okay, so it's the darkest and most energetic day of the year, Mahashivratri. Okay, and that's why it becomes very important for spiritual people. There is a natural upsurge of energy in human beings. Okay, and therefore the spiritual people, they make sure that they celebrate it throughout the night. Okay, so that the energy finds a way
in the body. Okay, and and then the different people celebrate it for different regions. Is very important for people in family situations also, because it was Shiva's marriage anniversary. Okay, and he is the epitome of balance between asceticism and and family responsibilities. Okay, and then it's also celebrated by ambitious people in the world, because Shiva happened to conquer all his enemies on that day. Okay, so that's why Mahashivratri is important, and it's celebrated by all. Okay, especially spiritual people. Thank you. तो हमें पता चला कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का विवाह हुआ था, एंड इट इज़ द डार्केस्ट डे ऑफ द एंटायर ईयर। और अमरदीप जी ने बात किया अभी कुछ नेचुरल अपसर्ज ऑफ एनर्जी। उस दिन एनर्जी लेवल, ऊर्जा का जो लेवल है वो बहुत हाई रहता है। तो चलिए ठीक है, हमने इसको जाना और समझा, और महाशिवरात्रि तो हमने बहुत बखूबी, बहुत ही प्रेम से गंगा जी के घाट पे मनाया था। तो अब मेरा सवाल है, अगला सवाल और आखिरी सवाल है ये, अमरदीप, हाउ कैन वी रिलेट अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी एंड शिवा? हम शिव जी को और अध्यात्म को और स्पिरिचुअलिटी को हम एक साथ एक सूत्र में कैसे बांध सकते हैं, और अपने से हम कैसे संबंधित कर सकते हैं? प्लीज़ बताइए। Well, that's a good question. I think there is a deep connection between Shiva and spirituality. Okay, because he is also referred as Adiyogi or Adi Guru. Okay, Adi means first. He was the first yogi or first guru, about spirituality. So he was the person who created and who taught yogic sciences for the first time to his first set of disciples, who were later known as Saptarishis. Okay, there were 7 of them. Okay, who in turn later spread yogic sciences to the world. Okay, so yoga for us, is just not standing on the heads or breathing or whatever, which one generally thinks. It's a very holistic, science, which can be traced back to ancient India. Okay, it's a holistic practice which connects body, mind, and spirit into one, and leads to very holistic health and well-being, which could be physical, mental, and spiritual. So Shiva started spirituality when he gave the first lessons of spirituality, like yoga, pranayam, and meditation to his first batch of disciples, Saptarishis. Okay, in Himalayas near Kedarnath. Okay, when you see statues of Shiva, you'll see him in meditation. Okay, which embodies peace and stillness. Although he's also known as destroyer. So, and this balance is an essential aspect of yoga, where surrender and strength, they coexist. Okay, and by the way, in yogic philosophy, destruction is not a negative act. Is the essential part of the cycle of life. Okay, which leads to transformation and renewal of spirit. Okay, and last but not least, when it comes to spirituality, Shiva also stands for pure consciousness. Okay, or Shuddha Chetana. Okay, this has been depicted very beautifully in Nirvana Shatkam or Atma Shatkam slokas, which we played earlier. Okay, which was composed by Adi Shankaracharya. These slokas depict Shiva transcending duality and being the pure consciousness or Shuddha Chetna. Okay, so that's Shiva for us. Thank you. तो शिव जी यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना, और हमें ये भी पता चला कि महाविनाश यानी डिस्ट्रक्शन ख़राब नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन के बाद ही दोबारा से रिवाइवल शुरू होता है। सो थैंक यू अमरदीप, आपने तो हमें बता दिया कि शिव जी कौन है, शिव जी कहाँ मिलेंगे। पहले तो हम बहुत घबरा गए थे कि हमारे दर्शक वहाँ, हम यहाँ और शिव जी कहाँ। ठीक है, तो हमारे सारे सवालों का हमें जवाब मिल गया। दोस्तों, हम आपको फिर से एक बार याद दिला दें
कि आपके जो फीडबैक है, प्रतिक्रिया है, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इसमें देखना चाहते हैं वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अब इसके बाद हम प्रोसीड कर रहे हैं भक्ति की शक्ति की तरफ, जिसमें एक बहुत प्यारा सा भजन कम गीत आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो बहुत ही जल्दी हम आपके साथ फिर एक बार जुड़ेंगे अपने 4th एपिसोड के साथ। प्रोग्राम का नाम ना भूलिएगा, हम और हमारी दुनिया। हर हर गंगे, घर घर गंगे। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो हे शंकरा,